In our previous class, we have learned about the different types of fractions, adding fractions, unit fractions, like fractions, unlike fractions, and in this class, we are learning equivalent fractions. What are equivalent fractions? Equivalent fractions are the one जो कि fractions आपस में equal होते हैं, but जो उनका fraction का जो amount है वो differ करता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? दे आर द मल्टीपल्स. जैसे कि हम 2 का टेबल अगर बोलते हैं तो 2 के टेबल में द मल्टीपल्स आर 2 2s are 4, 6, 8, 10, 12 and so on. So likewise equivalent fractions are the ones जो कि बढ़ते चले जाते हैं because they are the multiples of that fractions. but amount होगा जो फ्रैक्शन होगा वो सेम रहेगा. Suppose if we have a fraction like 1/2 और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मुझे फाइंड आउट करना है तो उसको इक्विवेलेंट अप टू 5 प्लेस इफ आई वांट टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ दिस नंबर. तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी. सो 1/2 विल बी मल्टीप्लाइड विद 2/2 and we will get 2/4. So 2/4 is the equivalent fraction of 1/2. And I want to find out the equivalent fractions up to 5 numbers. So again I will multiply it with 3/3 in the numerator and denominator and my answer will be 3/6. Again if I want to find out the next equivalent fraction, then I will multiply the number with 4/4. So that will become 4/8. And if I want to further find out the equivalent fraction, then 1/2 into 5/5, so that will be equal to 5/10. So this is how we find out the equivalent fractions of a fraction. Same numbers से हम multiply करते हैं like 2/2, 3/3, 4/4 and 5/5 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं. अब हम देखते हैं कैसे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दिस रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. तो दिस इज 1/2. इस वाले रेक्टेंगल को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो दिस इज 2/4. सो सी यहाँ पर जो हमारा फ्रैक्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है लेकिन जो अमाउंट है वो सेम है. इस वाले पार्ट में दिस इज 2/4, इस वाले पार्ट में दिस इज 3/6, इस वाले पार्ट में दिस इज 4/8 and this is 5/10. So the fraction is increasing because we are finding the multiples of the equivalent fractions, but the portion is same. So this is how we find out the equivalent fractions. Now if we want to check whether the fractions are equivalent or not, so how do we do that? See, suppose if we have two different fractions and one fraction is 2/5 and the other fraction is 4/10, and if we want to find out whether these two fractions are equivalent or not, then we have to cross multiply these two numbers. So the numbers will be 2/10, 2 into 10, 2 से मल्टीप्लाई किया 10 को and the next number is and 4 into 5 will become 20. So both the answers are same. दोनों का जो प्रोडक्ट आया है which is equal to 20, that means दोनों equal है. तो yes, these are equivalent fractions. Then we will write yes, these are equivalent fractions. So this is the way how do we find out कि fractions equivalent हैं या नहीं है. Simply we have to cross multiply the two numbers and if they are equal that means the fractions are equivalent fractions.